हाय साथी, जय जगन्नाथ। ओडिया वेब डेवलपर यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे बहुत बहुत स्वागत। फुल स्टैक डेवलपमेंट नोड.js पार्ट 18 क्लास रे आमे npm विषय जानिबा, जोटा कि नोड.js रे बहुत इंपोर्टेंट। npm रो फुल फॉर्म होची नोड पैकेट मैनेजर, जहा कि एक्सटर्नल मॉड्यूल रो पैकेज को से मैनेज करे। आमे npm यूज करके पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल अपडेट इस जिंस करि परिबो। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। और वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानक एति कथा कहबे चाहिबी कि कंप्लीट वीडियो को देखिबे। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अछि ना। नोड.js रे npm को बहुत बड़ा रोल रहउछि। आपण माने कंप्लीट वीडियो देखले बहुत किछ सिखि परिबे। आ जो माने चैनल रे अछन, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। और जो माने नुआ अछन, लास्ट वीडियोस को देखि के आसन, सब डाउट क्लियर हो जबो। तो यदि चैनल सब्सक्राइब करना छिए करि देबे। ए टाइप रो बहुत सारा वीडियो मु आपण एसी चलंतु आज के वीडियो को स्टार्ट। व्हाट इज npm इन node.js? node.js रे npm कोन? The full form of npm is node package manager। आपण माने नोड पैकेज जरूर जानि परथुवे। नोड रे जहा जहा किछि मॉड्यूल माने एक्सटर्नल मॉड्यूल पैकेज में यूज करू, ताको हमें मैनेज कर परिबे। केमिति मैनेज कर परिबे? Node Packet Manager is a common command line tool for this npm। बेसिकली हमें कमांड लाइन टूल भाବରେ ताको Node.js एनवायरनमेंट रे यूज करू। npm can installs updates or uninstall Node.js packages in the application। गोटे एप्लिकेशन रे हमें जहाँ भी npm यूज करके पैकेज इंस्टॉल करिबा, ताको अनइंस्टॉल हमें करि परिबा, अपडेट करि परिबा। अब बहुत डिफरेंट पैकेज को भी इंस्टॉल करि परिबा। नेक्स्ट, npm is built-in modules that are part of the platform with Node.js installation। npm होची गोटे Node.js रो इनबिल्ट मॉड्यूल, जोटा कि सेही Node.js रे गोटे पार्ट, ए प्लेटफॉर्म रो गोटे पार्ट, जोटा कि Node.js इंस्टॉलेशन संगे रे ही आसी थाए। नेक्स्ट, npm node package manager is the default package manager। ये जो node package manager जोटा npm Node.js रो होची डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर, आ जोटा कि जावास्क्रिप्ट रे लिखा जायछि, is written entirely in javascript। ये node package manager डिटली जावास्क्रिप्ट रे ही लिखा जायछि। तो निहाती भाबरे npm को यूज करिया बहुत सहज होई पारे। नेक्स्ट, npm manages all the packages and modules for Node.js। npm कौन करे ना, जहाँ किसी एक्सटर्नल पैकेज एक्सटर्नल मॉड्यूल Node.js पे मैनेज करिवारे हेल्प करे and consist of command line client and npm। तो हमें कमांड लाइन यूज करके Node.js रो पैकेज मैनेजर को पैकेज मॉड्यूल को हमें मैनेज करि पारू। नेक्स्ट, npm is developed by Ijas Z Kutler। Ijas Z Kutler जने डेवलपर जे कि npm डेवलप करथिले। से केबे डेवलप करथिले? हां, जनवरी 12 2010 रे npm को डेवलप करथिले। तो तार इनिशियल रिलीज थिला जनवरी 12 2010। ठीक अछि। नेक्स्ट हमें जीवा npm रा ऑफिशियल वेबसाइट https://www.npmjs.com। तो आपण माने npm.js वेबसाइट रो एक्सटर्नल पैकेज Node.js प्रोजेक्ट रे इंस्टॉल करि परिबे। टाइप npm-v in your terminal or command prompt to check Node.js to check node package manager to check npm is the system installed or not।
ये जो npm-v टाइप करके आपण माने कमांड प्रॉम्प्ट रे चेक कर परिबे कि आपन सिस्टम रे npm वर्जन अछि कि नहीं। To access npm help, type of npm help in the command prompt। तो आमे टाइप करके ଏବେ ଦେଖିବା npm वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट रे आउ npm help को भी टाइप करके देखिवा कोन हमर आउटपुट आछी। तो एबे चलंत आमे हमर लैपटॉप स्क्रीन पे जिबा। मो एबे मोर लैपटॉप स्क्रीन पे आसी छी। एठी विंडोज रे मो टाइप करबी कमांड प्रॉम्प्ट देखो आसुची। तो एठी मो लिखिबी npm हाई। आपण मान देखि परथुवे तो टाइप कली npm-v। तो npm रो वर्जन जोटा लेटेस्ट वर्जन अछि मोर 8.11.0। एटा केबे भी चेंज हे पारे, एटा सब बेले चेंजेबल, जेमती अपडेट हबो सेमती चेंज हबो। तो आपण माने ओरी हवा किछि प्रॉब्लम नै। आपणकर जेबे भी अपडेट हबो मो वीडियो ओल्ड ही जेथिबो आपण माने कंपेयर करि परिबे कि आपणकर वर्जन कोन अछि आ मो वर्जन कोन थिला। नेक्स्ट देखिबा npm help। आपण माने एठी देखि परथे बहुत सारा npm रिलेटेड कमांड शो करूची। जेतेबेले मो प्रेस करूची npm help, तो ये जो वार्निंग टा दोची ग्लोबल हाइफेन ग्लोबल हाइफेन लोकल आर डिप्रिकेटेड। तो ये कमांड आउ नाही ता जगह रे यूज करिया से कहूची हाइफेन लोकेशन इक्वल्स टू ग्लोबल इंस्टेड ऑफ दिस। तो या संगे किसी भी प्रॉब्लम नहीं। तो एबे हमें हमरो प्रेजेंटेशन पे जी। तो मो एबे मोर प्रेजेंटेशन को सी छी। नेक्स्ट जीवा हमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ npm in Node.js। तो कितने टाइप रो मोड अछि। देयर आर टू टाइप्स npm ऑपरेशन मोड आर देयर। एठी हमें दी प्रकार ऑपरेशन मोड देखिया हो जिबा। गोटे होची लोकल, आउटा होची ग्लोबल। प्रथम टा होची लोकल। इन द लोकल मोड npm performs operation for the particular local directory while affects an application in that directory only। ता माने कोन। तो ई जिंसटा को बुझिया पे मो लैपटॉप स्क्रीन को जीवी। तो मो एबे मोर लैपटॉप स्क्रीन को आसी छी। पे मो जदी दिस पीसी को क्लिक करबी, जदी आपनकर प्रोजेक्ट थिबो, आपण गोटे नोड प्रोजेक्ट क्रिएट करछन node_demo। जदी ए जो node_demo जदी आपनकर गोटे एप्लीकेशन फाइल हुए, देन आपण जदी ई फाइल रे npm को इंस्टॉल करूचंदी, देन पर्टिकुलर ई फोल्डर रे ही माने आपनकर npm टा एप्लीकेबल हबो ओनली ए फोल्डर रे ही। ठीक अछि। तो नेक्स्ट जीवा हमें तो गोटे पैकेज केमती इंस्टॉल हुए। npm इंस्टॉल पैकेज रो नेम जेमती कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मो लिखी जी। तो ये गोटे जस्ट मैं आपन को एग्जांपल देछि। आगो को मो या पर ने कि बहुत सारा वीडियो एक आसीबी। नेक्स्ट टाइम जीवा सेकंड टा होची ग्लोबल। इन द ग्लोबल मोड npm performs operation which affects all the Node.js application on the computer। तो जेमिति माने हमें देखिले कि लोकल रे तो ये होची लोकल। लोकल जदी आपण
लोकाली जदि आपण npm इंस्टॉल करछन्ती पर्टिकुलर ए फोल्डर पई ए ड्राइव रे ए फोल्डर पई ही माने एप्लीकेबल होबो। तो जदि आपण माने एटा कंट्रोल मो एक्स करकी कट करकी ए जीबी ई ड्राइव रे रखिबी। तो एठी जदि आपण रखुचन्ती ए npm किछि भी वर्क करिवन। जे आपण ग्लोबल इंस्टॉल करूचन्ती ग्लोबली जदि इंस्टॉल करूचन्ती गोटे माने प्रोजेक्ट रे npm को देन आपण माने npm ई ड्राइव रे भी यूज कर परिबे सी ड्राइव रे भी यूज कर परिबे ई ड्राइव रे भी यूज कर परिबे। तो जेहेतु एटा ग्लोबल इंस्टॉल हे गला तो आपण माने जो फोल्डर जो ड्राइव रे चाहिए ग्लोबली इंस्टॉल कले npm को आपण सबुटी यूज कर परिबे और कंप्लीट आपण को कंप्यूटर बा सिस्टम बा लैपटॉप ग्लोबली इंस्टॉल करिया पई npm install -g पैकेज नेम -g ता होची ग्लोबल। एट गोटे एग्जांपल लिखिचे npm install -express npm installs global packages into ये गोटे पाथ रे रुहे जोटा कि यूजर भितरे लोकल भितरे lib फाइल ये गोटे फाइल देन लाइब्रेरी lib रो फुल फॉर्म होची लाइब्रेरी देन lib फाइल भितरे नोड मॉड्यूल। तो पर्टिकुलर ये जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स भितरे पैकेज सब डाउनलोड ही रुहे। ठीक अछि। नेक्स्ट टाइम जीवा apply -g in the install command to install package globally. For example, the following command will install package globally. तो जो जिनसटा मु आपन को कहली कि npm install -express -g ता होची हमें तो ग्लोबल इंस्टॉल करबा -g को हमको एक्स्ट्रा लिखिया में पड़ी। नेक्स्ट जीवा हमें how to add dependency into package.json. Use --save at the end of the install command to add dependency entry into the package.json of your application. The package.json जोटा अच्छी सेटा हमें कौन कौन पैकेज इंस्टॉल करले देखि परिबा केमति देखि परिबा जदि हमें -save को हमें लास्ट रे लिखिबा जेतोला आपण पैकेज इंस्टॉल करूचंती देन npm install पैकेज नेम देन -save जदि लिखिबे देन आपण Node.js रे गोटे package.json वाली फाइल थाए सेथरे आपण देखि परिबे ओ पैकेज आपण इंस्टॉल करले आ को वर्जन रे अछि मैं लिखिची यूज -save at the end of the installation command to add dependency entry into the package.json in your application। तो json फाइल माने कोन मैं जाय कहिनी तो आपण मन को देखिए देबी एक्चुअल json फाइल केमति देखा जाय। यदि आपण जानि नांती आमे आगु निहित भाबरे json विषय डिस्कशन करबा मैं यहाँ पर टॉपिक लेके आसी। नेक्स्ट जीवा the package.json of Node.js console app एटा गोटे डेमो फाइल ना दिए जायछि प्रोजेक्ट will look something like below। तो json फाइल एक्जेक्टली ए टाइप रो देखा जाय गोटे कर्ली ब्रेसेस भितर नेम रहिबो नेम गोटे एप्लीकेशन रो नेम जोटा कि Node.js console app तार वर्जन होची 0.0.0 डिस्क्रिप्शन रे भी सेम अछि देन मेन रे app.js ऑथर के प्रोजेक्ट बनौछन ताको नेम इति आपण मन देखि परछु डिपेंडेंसीज जोटा कि एक्सप्रेस 4.13.3 तो एटा जेतबेला आपण अपग्रेड डाउनग्रेड करिवे
तो आपणकर ये वर्सन रे चेंजेस देखि पारिबे डिपेंड करूची जदि आपण हाइफेन सेव इंस्टॉलेशन कला बेले लिखुचंदी देन आपण इठी डिपेंडेंसी एंट्री रे देखि पारिबे जे आपण हाइफेन सेव ऐड करू नाथि पारिबे तो बेटर आपण जते बेले किछि भी पैकेज इंस्टॉल करिवे लास्ट को हाइफेन सेव तो बेले आपण टाइप करिवे आपण कंप्लीट इंस्टॉलेशन पर ये डिपेंडेंसी देखिपारे जहाँ इंस्टॉल करेंगे पैकेज ये आपणकर ये जो पैकेज डॉट जेसन रे आपणकर फाइल ये शो कर फाइल नेम कौन पैकेज इंस्टॉल कर शो कर विथ वर्जन सांगे तो ये आपण वर्जन को अपग्रेड डाउनग्रेड कर नेक्स्ट जीवा हाउ टू अपडेट पैकेज इनटू पैकेज डॉट जेसन तो पैकेज डॉट जेसन रे हमें पैकेज को अपडेट करने npm अपडेट पैकेज नेम हमको लिखा पड़ो जमती कि npm अपडेट एक्सप्रेस तो मुझे जो जिनसा कहली तो ये आप देखिपे एक्सप्रेस 4.13.3 तो यार वर्सन को जदि आप मैंने अपग्रेड करने चाहिए npm अपडेट एक्सप्रेस तो प्रेस करेंगे हाइफेन सेव करके आपण नुआ जो एक्सप्रेस आपण को यहाँ शो कर जहाँ भी किसी अपडेट वाला वर्जन आपण को ये डिपेंडेंसीज रे शो कर नेक्स्ट हमें हाउ टू डिलीट पैकेज इनटू पैकेज आम केमिति पैकेज को अनइंस्टॉल करि परिबा npm uninstall पैकेज नेम जोटा कि npm uninstall एक्सप्रेस तो आम अनइंस्टॉल करबा पई npm uninstall पैकेज नेम हमको देखिया पई पड़िबो कमांड रे तो यदि आम npm uninstall करूछु देन कंप्लीट अनइंस्टॉल हो जिवो देन ये आमर डिपेंडेंसी रे डिस्प्ले करबनी तो जहाँ भी किसी अपग्रेड अनइंस्टॉल ये सब डिपेंड करिवो ई जेसन फाइल ऊपर आपण माने एठी देखि परिबे होप आपण मानको ये वीडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव लागिथिबो जदि आपण मानको ये वीडियोटी इनफॉर्मेटिव लागिछि देन वीडियो रे गोटे लाइक देबे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना वीडियो देखुं काइंडली सब्सक्राइब कर देबे और चैनल को बहुत सारा अपन फ्रेंड मान शेयर करंतु बहुत किसी जिनस आपंकर सांग भी शिखी पारे चैनल को सब्सक्राइब करदे मत गोटे मोटिवेशन मिले यही टाइप वीडियो बहुत सारा नहीं आस पारि ये तो थिला हमर बेसिकली थ्योरी क्लास देखिए वीडियो टी मुझे एंड कर नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।